Morning Medicos. We are feeling immense pleasure to introduce Dr. Rohit Singh Chauhan boss in front of you, who has secured All India rank 224 in INICET May 2024. Welcome, boss. Thank you for giving us time from your busy schedule. No, Arey Faisal, I'm not that busy. And thank you for hyping me that much. I have not expected that. And it's all because like you and all the Morning Medicos team and also my seniors and juniors and also my batchmate who have been hyping me a lot. And thank you, everyone. Like it really means a lot. बस सबसे पहला बॉस जो मतलब मुझे लगता है सबके मन में जो सवाल होता है कि जहां से आपने शुरू किया जीएमसी बांद्रा से आप पहुंच Yeah. गए एम्स डर्मा दैट्स मतलब ट्रिमेंडस। तो सारे जो भी बच्चे पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो मन में कहीं न कहीं ये सवाल होता है क्या बस हम ये सब अचीव कर सकते हैं कि नहीं? सारे पेरिफेरल कॉलेज में कि हमने अभी तक टॉपर सिर्फ बस मतलब एमएमसी से देखा है, एम्स से देखा है। ये सारे कॉलेज जो टॉप है केजी है, इनसे बच्चे करते हैं। तो बस आपने क्या अलग किया कि मतलब एक पेरिफेरल कॉलेज होने के बाद भी आपने इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया? See, first of all, I have never dreamt of it. Ki I would be a INI like I can crack INI. But I think it would the credit goes for the seniors because if they would not have done that previously, so I would not have like dreamt of it कि हम भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे जी जब बस। seniors ने निकाला they have done जी, tremendously well in the previous INI sets and they have done like really well in their previous exams तो हमें भी लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं so they हुँ, have literally forged the way for us कि हाँ we can do this so I have taken जी। advice from all the seniors कि how to do that and what it takes so yeah उनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं so, yeah. ओके बस। बस हम मतलब जानना चाहेंगे बस आपने जब पहली बार आईएनआई सेट दिया था, तो तब आपकी बॉस रैंक क्या थी? I have not given the May 2023 INICET and November INICET was my first exam. Like apart from the NEET 2023, I have given the NEET 2023 and my rank in NEET was 29K. And after that, I've given my November INI in which I have secured a rank 1616, that is 1616 rank. And जी बस। in this INI, as you all know, I have like secured 224 rank. अच्छा बस। बस दूसरा सवाल ये था कि बस आपने सीरियसली मतलब कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आईएनआई सेट या नीट पीजी के लिए? Like past year has been like a journey for me क्योंकि हम लोगों ने internship में इतनी पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि internship was very यस। hectic for us. There was like too much of duty work for us. तो हम internship में पढ़ भी नहीं पाए थे और दूसरी चीज we were also thinking to enjoy this period of time. तो internship में हम लोग नहीं पढ़े इतना seriously. But after coming back to home, so yeah, we prepared for it like seriously. ढंग से तमीज से पढ़े अच्छे से तो या लास्ट पास्ट ईयर वी हैव स्टडीड अ लॉट बॉस आपने मतलब लास्ट 1 ईयर में अच्छे से प्रिपेयर किया है। मेनली उसके पहले आप बस बहुत वही जो थोड़ा बहुत होता है वही। I think it's not about that and profs plays a very crucial role in your journey ओके, all your professional exams they plays a crucial role because if you have read properly your exams you have given your exams properly in the all the professional years so I think it would help you a lot in preparing this for competitive exam like NEET and INICET तो या जो मेरी प्रोफेशनल एग्जाम की जर्नी थी उसने मेरे को काफी हेल्प करी इन दिस पास्ट ईयर बॉस अब अगला सवाल जो आया था आपके लिए वो ये है कि बॉस आपने हर प्रॉप ईयर को कैसे अप्रोच किया? मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर उसमें आपने किसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी? फिर पढ़ी तो कौन-सी पढ़ी? तो बस हम फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं बॉस। हाँ फर्स्ट ईयर में तो नए नए आए थे कॉलेज में मतलब पेरिफेरल था बिल्कुल कॉलेज नहीं पता था कुछ हमारे सीनियर्स भी बस एक ही ईयर के थे
तो इट वाज काइंड ऑफ ऑल न्यू टू अस कि हमें करना क्या चाहिए। तो आई और उस टाइम प्रेप, मैरो, डैम्स वाज नॉट that nobody advised us to take that in first year. So I have read all the books during my first year, like for BDC, BDC in art and physio. I couldn't able to study much because it's one of my weakest subjects still. And in biochem, I've read a very passing kind of book, that is double A. I've read that, so I could only pass in that exam. And after that, I've read few notes from here and there. So yeah, in first year I've read that. And coming to second year, I've joined dance in my second year. I have joined Dance. satellite classes from dance. So dance में path में I took like whole of my journey has been like my basics are from dance. और फिर path में I also studied some of the books, side books, and in micro I have read Anant Narayan, and in pharma I have read KDT, but I could not able to recall anything from that. It's not the best, but I would not recommend anyone to just read KDT because it's like a very, and pharma is a subject like it's very sublimating subject, so you have to work hard on it. So I've read, I was like mainly dependent on my notes and my second prof. And after that, in third year, I've started making notes of my fourth year because I took DEMS. So I've only made the notes. I've made the notes. I did write them, but I could not able to study them. In third year, I've like ENT also. I've read Dhingra. I've also read the book Khurana in Opta. In PSM, I could not able to read Park because that book was like really difficult for me. So yeah, I was also dependent on my notes in PSM. So yeah, this is like, and I've started making notes in the third year only of the final year. And in final year, I've like only read the major subjects, that is gynecology, medicine, and also the surgery and PD and ortho. These only five subjects I've read, and I haven't read any of the book in my final year. I've only read all the notes of the dams, and I've watched the video lecture of the dams, and along with that, I've also read a few of the subjects of the like from Marrow. I've read notes from the Marrow, so I've just like compiled all of the good stuff from here and there in my profs. ओके, तो बस मतलब आपने सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में तो पूरी बुक थी, सेकेंड ईयर से डांस था। या सेकेंड ईयर से मतलब डांस स्टार्ट हो गया था साइड बाय साइड, एंड मेरा एक ही एम होता था कि मतलब प्रॉफ्स अच्छे जाने चाहिए, मतलब इट विल गिव यू जी, कॉन्फिडेंस कि हाँ, कि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डोपामिन सर्ज आल्सो, लाइक या समथिंग इज गोइंग गुड। बस कभी फोमो की मतलब अगर जैसे मेरा दोस्त मैरो से कर रहा है, कोई मेरा दोस्त प्रेप से कर रहा है ना? कोई दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, तो होता है ना एक टॉपिक में मतलब अगर हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे देखें, कुछ अलग-अलग तो बताते ही हैं, तो हम किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे हम्म। स्टिक कर सकते हैं, हर प्लेटफ़ॉर्म पे तो कर नहीं सकते। तो इस फोमो के लिए क्या किया जाए? इस फोमो के लिए आपने क्या आई किया? थिंक I think it doesn't matter in the end. It doesn't matter. You have to stick to one source, and you have to just be exemplary good in that. उसको हुँ, बहुत अच्छा करो, एक ही सोर्स को पकड़ो, एंड यू हैव टू जस्ट स्टिक टू इट, और उसको बेस्ट बना लो, एकदम बेस्ट बना लो, एंड डोंट गेट इनटू द फोमो कि इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा। अल्टीमेटली द सिलेबस एंड द जिस्ट इज द सेम, कि यू हैव टू रीड द जी, एनआरट, यू हैव टू रीड इट नो मैटर व्हाट। सो व्हाटएवर यू बहुत चूज, इट्स अप टू यू, जो जिसको सूट करे। मतलब सम पीपल प्रेफर डैम, सम पीपल पीपल प्रेफर मैरो, सो जो जिसको सूट हो जाए, जस्ट स्टिक टू इट। डोंट गेट इनटू लाइक आई हैव टू चेंज दिस, आई हैव टू चेंज दिस, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो आपने तो सोर्स तो बता ही दिया मैरो का। बस आपने प्रॉफ एग्ज़ाम भी बता दिया कैसे अप्रोच किया। बस तो आपने मेजर सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच किया? स्पेशली जो अभी भी दिक्कत है बहुत लोगों की, हमारी भी थोड़ी बहुत है, बस मेडिसिन बहुत वास्ट है। तो उसको कैसे कंपाइल किया जाए ताकि लास्ट मिनट रिवीजन हो सके? गायनी बहुत बड़ी है, सर्जरी भी जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको कैसे आपने कंपाइल किया था ताकि लास्ट मिनट रिवीजन हो सके? प्रॉफ के लिए भी या आईएनआई के लिए भी, दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले प्रॉफ के बारे में आप बता दीजिए बॉस कैसे आपने उसको कंपाइल किया था? मतलब ये होता है कि लोग थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं,
पढ़ना अपने लाइफ में या फोर्थ ईयर में कि मतलब अब फोर्थ ईयर आ गया है तब भी उसके बाद थोड़ा लेट पढ़ेंगे कि नाउ दिस इज द टाइम यू विल स्टडी बट थर्ड ईयर थोड़ा आपके पास थोड़ा लेट मतलब अच्छा चिल होता है सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू जस्ट मेक द नोट्स only make the notes only write them or only watch the lectures in that period of time and when you just come to the fourth year तो आपका एक पास एक मतलब विजन होगा कि now what I have to read in these subjects right तो उसके बाद जब फोर्थ ईयर में आप आओगे तो आपके पास एक ऑलरेडी विजन होगा कि हाँ हमें ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसके बाद ये होता है कि मेडिसिन में I couldn't able to read the books because the medicine is already very vast. But I don't suggest वेरी people if some people want to read book they can go for it. But I could not able to. So फिर मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी आई वाज लाइक सोली एंड होली डिपेंडेंट ऑन नोट्स फिर मैंने नोट्स को मतलब if if people think that they have to read a notes only one time or two time they could not able to just score good marks they have to give like multiple readings to them और फिर ही तुम्हारा रिवीजन स्ट्रांग होगा ऐसा नहीं होगा कि एक बार पढ़ के यू विल जस्ट लाइक स्कोर well in exams so you have to give the multiple readings and try to make short notes of it you have to make a summary out of each topic as if you are reading a mitral stenosis you have to make a one page or small short note kind of summary which you tends to forget about it so bas यही है कि try to concise your notes बस and do all the pyqs and pyts that's likewise in surgery and obs gynae and all Yeah, the major in subjects. every subject in major subject you don't have to just read from one page to the last page because the subjects are very vast so you have to just stick to the all the pyqs and pyts kind of stuff you have to go for like trauma and very extensively but you don't have to go for vascular surgeries and transplant surgeries very extensively because it has not been asked that much so you have to just keep that thing in mind कि क्या चीज ज्यादा पूछी जा रही है तो जो चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है तो उसको अच्छे से करो और जो चीज़ नहीं पूछी जा रही है यू कैन लीव दैट स्टफ। कि बस आपने मेजर सब्जेक्ट का अप्रोच तो बता दिया। बस आपने बताया कि आपने फाइनल ईयर में सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही करा था। या मेडिसिन, आई हैवंट सर्जरी, शॉर्ट सब्जेक्ट इन माय पीजीवाई फाइनल ईयर। हाँ, पीजी और ऑर्थो। आपने बाकी शॉर्ट एरिया नहीं सब्जेक्ट्स नहीं किया। तो आपने बस इनको इंटर्नशिप में किया या इंटर्नशिप के बाद किया? कब किया? कहाँ से किया? और क्या मतलब इनसे क्वेश्चन आए थे तो कितने आए ऐसे मतलब आइडिया हो तो? I haven't done anything in my internship on like in respect in when you talk about studies. So I haven't studied anything in my internship. But internship के बाद when I get back to home तो करना था. Obviously you have to just prepare and just crack these exam and you don't want to stuck in that stage. तो हम लोगों ने मतलब पढ़ना start किया and in short subjects every short subject is scoring according to me they are very scoring subjects because they don't ask very extensive questions from that only pyqs and pyts has been asked like in a upgraded fashion तो यही है कि हुँ, मतलब शॉर्ट सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ना है यू हैव टू ओनली रीड द पीवाईटीज एंड पीवाईक्यूज ऑफ दो सब्जेक्ट्स ओके। और कोई भी सोर्स हो चाहे मैरो हो चाहे डैम्स हो आई हैव लाइक डन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मैरो एंड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द डैम्स राइट तो उस एंड ऑल्सो आई हैव टेकन द बीटीआर इन द पास्ट ईयर सो आई हैव बीन फॉलोइंग जैनब मैम एक्सटेंसिवली हुँ, तो उसके बाद सारा कुछ इधर-उधर से जो मतलब बेस्ट लगा, कुछ डैम से, कुछ मैरो से और बीटीआर के साथ-साथ शॉर्ट सब्जेक्ट्स करे, एमसीक्यूज़ लगाए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और शॉर्ट सब्जेक्ट्स प्लेज़ अ वेरी crucial role in deciding your rank. You can get the selection from the major subjects and all the second year prof and everything, but your rank has been decided by only short subjects. So you have to do well. शॉर्ट सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते मतलब फाइनल प्रॉफ के लिए बिल्कुल स्किप भी कर नहीं। सकते हैं लेकिन आईनाईसेट नीट पीजी के लिए स्किप नहीं कर सकते, वो करना ही I'm पड़ेगा। not suggesting I'm not suggesting that you have to skip those subjects from for your final year, but ओके, I have not done that. So I'm just saying ओके, this. So if a person want to do short subject in final year, it's up to them. I'm not suggesting that. But yeah, short subjects indeed play a major role in your preparation when you're preparing for a competitive exams because you can get like 5 out of 5 correct in derma. You can get 5 out of 5 correct in ortho so they plays a major role in like your rank deciding thing
बॉस आपने मतलब किसी भी साल में कोई स्टैंडर्ड बुक यूज़ किया, जो मतलब हाइप है I जैसे think ग्रेस, रॉबिन I have studied like some of the standard books, not many, because I'm not a very hardworking kind of person. So I usually skip that part of reading books. I just like stick to the notes and mug them up. But I'm not suggesting, anyways, I'm not in any sense, I'm not suggesting you should not be reading books, because I have read books like in my first year, second year, and third year. In all these years, I've read notes and books side by side, but in finally I couldn't able to, because the time was very short for me to just memorize stuff. बॉस हार्ड वर्क का तो पता नहीं, स्मार्ट वर्क तो आपने बहुत अच्छा किया है। वही हम सबको जानना है कि आपने स्मार्ट वर्क कैसे किया है, हार्ड वर्क करके भी क्या फ़ायदा? अच्छा बॉस, नहीं नहीं, बॉस अगला सवाल ये था both are बॉस। important. I think both are important. Smart हाँ, work along with hard work, both are important, and you have to do both. आगे बस उसके बाद से अगला सवाल बस क्यू बैंक आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ने के बाद या कोई चैप्टर या कोई यूनिट फिनिश करने के बाद उसका क्यू बैंक कैसे करते थे? आपने कब से शुरू किया? और ऑन एन एवरेज रफली मतलब कितना क्यू बैंक आपने दिया था? I've started my Cuban doing Cubank from September, last year September only, सितंबर September लास्ट ईयर 2023. सितंबर। Yeah. अच्छा, So I took Marrow QBank series. I think it's one of the gold standard for practicing MCQs, because it suited me well. So उसमें से I started and I used to do subject wise. कि if I'm preparing for like PSM for 3 days, so I'll do the only PSM stuff for 3 days. And on an average, I used to do like 75 to 100 questions per day. And ओके। I used to do जो टैग हम करते थे, I used to use हाँ, 3 tags बहुत only, that is clinical, NEAT and INI. I haven't used any of the other tags. Have only used these three tags in my MCQ based preparations. और हर दिन मतलब यही टारगेट होता था, कम से कम 75 to 100 MCQs. And when you just go forward with your preparation along with time, you tend to practice more and more MCQs. मतलब बॉस आप कस्टम मॉड्यूल करते थे बेसिकली। 3 टैग लगा के Yeah. कस्टम मॉड्यूल हर दिन 75 से 100 क्वेश्चन। Yes. ओके। बस और ग्रैंड टेस्ट बॉस कब से देना शुरू किया आपने? ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट शुरुआत में देना जब जून से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन. आई यूज्ड टू गिव जीटी एवरी 21st डेज, क्योंकि इन फर्स्ट रीडिंग यू हैव टू जस्ट रीड एंड मेक योर कॉन्क्रीट मटेरियल वेल. तो उसमें जब होता था तो हर 21st डे पे मैं देता था एक जीटी. एंड आफ्टर दैट लाइक हुँ, कमिंग व्हेन आई जस्ट टुक मैरो फाइनली, तो उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग जीटी एवरी 14th डे. तो उसके बाद 14 डे पे, हर 14 डे पे आई यूज्ड टू गिव अ जीटी. बॉस उसको एनालाइज़ कैसे करते थे और उसमें क्या रैंक्स आते थे? प्रोबेबल जो रैंक आते हैं उसमें, जीटीज़ में? एनालाइज तो ऐसे ही होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर द रॉन्ग वंस. कि व्हाट डिड यू डू दैट, आइदर ओके, इट्स अ रिकॉल मिस्टेक, आइदर you have a problem with your revision, either your notes are not good enough, or you just like you are doing the silly mistakes, right? So I have to just मतलब इनको इस तरीके से बाँटता था कि या तो सिली मिस्टेक है, या रिकॉल है, रिविज़न है, क्या दिक्कत है? तो आई यूज्ड हुँ, टू डू द रॉन्ग वन्स, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट यूज्ड टू डू द फास्ट फॉरवर्ड द राइट वन्स, दैट इज़ करेक्ट वन्स. तो उनको हुँ, देख के आई यूज्ड टू लाइक डू द एनालाइजिंग पार्ट ऑन द सेम डे. जिस दिन जीटी दूँगा उसी दिन ओके, करना है. और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं. रैंक हैज़ बीन अ गुड, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम September, I in my first GT I got around 1600 or 1800 rank. उसके बाद I got like around 1100, और फिर उसके बाद 900 and all. फिर after January and Feb I used to be under 1000 only, under 900, 500, 400, 300, something like that. ओके। बस सेम डे ही आपने करके सेम डे उसको एनालाइज़ करते थे, उसको अलग से कहीं लिखते भी थे बॉस? उसको अलग से कहीं लिखते थे उन क्वेश्चन्स को या हाँ, उसी में अगर मैं बुकमार्क ये सेव देखता कर था कि अगर ये पीवाईक्यू है या पीवाई2 है, पीवाईटी है, तो आई यूज्ड टू एनोटेट देम इन माय नोट्स ओनली. एंड इफ नॉट, सो आई डोंट लाइक, आई फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन. इफ इट इज अ पीवाईक्यू और पीवाईटी, आई विल जस्ट लाइक राइट देम इन माय नोट्स, दैट्स इट. बस आप में बहुत ज़्यादा हाइप्ड बुक है जो आईएनआई सेट के लिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हाइप्ड बुक है, फर्स्ट एड। आईएनआई सेट की बात आती है तो फर्स्ट एड की बात आती है।
Yeah. तो क्या आपने यूज़ किया था फर्स्ट एड? फर्स्ट और No, I सेकंड ईयर haven't के लिए? used that. I haven't used that, but I've heard a lot of thing about that, and a lot of my batchmates are still using it, and it's a very good book. It's a very good book, but I haven't used it, and I don't know about it. How is it? But yeah, it's a good book. That's all I've heard about it. ओके। बस बस अब बस बात ये है बस कि आपने इतने सारे सब्जेक्ट थे, तो इनको आपने कैसे एनोटेट किया था या शॉर्ट किया था? कि बस कितनी बार पूरे होल सिलेबस को रिवाइज़ किया था? और बस ये भी तो होता है ना कि लास्ट 10 डेज़ में यही कहा जाता है कि लास्ट 10 डेज़ में रिवाइज़ेबल मटेरियल होना चाहिए अपने पास, ताकि लास्ट 10 डेज़ में हम पूरा गो थ्रू हो सके, तभी याद रहेगी चीज़ें। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया था? मतलब जितना मेरे को सीनियर से एडवाइस मिला था, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवाइस मुझे ये मिली थी कि यू हैव टू प्रिपेयर योर मटेरियल फॉर द लास्ट 20 डेज़। कि आप हाँ, इस तरीके से पढ़ो कि आप 20 दिन में पूरा का पूरा यू हैव टू कंप्लीट योर होल 19 सब्जेक्ट्स इन द लास्ट 20 डेज, राइट? तो फिर फर्स्ट जब आप एंड यू हैव टू कंप्लीट अराउंड 4 टू 5 cycles, at least 4 to 5 cycles of revision you have to do that, and then you can only appear for the INI or whatever exam you are preparing for. तो ये था कि 4 to 5 preparation होनी चाहिए, and with every preparation cycle you have to cut short the time period. Suppose your first cycle is like 3.5 months, तो आपको ये नहीं देखना फर्स्ट थ्री ऑफ हाफ मंथ में कि आपको कितना आता है। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर योर मटेरियल फर्स्ट, जो आपको बार बार उसी से पढ़ना है। यू डोंट हैव टू जस्ट क्रिएट अ न्यू मटेरियल एवरी टाइम व्हेन यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द अनदर साइकिल। आपको फर्स्ट 3 मंथ्स या 3.5 months में यू हैव टू प्रिपेयर योर मटेरियल व्हिच यू आर गोना जस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन, and with each cycle, like second cycle is for 60 days, then 45 days, 30 days, and then 20 days. So you have to concise your material with every cycle, so you can just revise whole of your material in last 20 days. So one of whole of my seniors and along with some of my friends suggested BTR for that thing, because it's a very concise and very concentrated material for the last 20 days. So all I have done is like, along with reading my like, जो जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे, जितने भी मेरे पुराने नोट्स थे, उनको भी मैंने स्टिक रखा, एंड आई हैव जस्ट annotated them, whole of them in my BTR book. तो फिर मेरे को सिर्फ यही हो गया था, आई हैव ओनली वन सोर्स ऑफ दैट इज बीटीआर अलोंग विद माय एनोटेटेड नोट्स। तो जितना भी मेरे को एक्स्ट्रा लगता था कि हाँ बीटीआर में थोड़ी कम जगह पड़ी है, तो आई यूज्ड टू जस्ट डू द A4 शीट्स, उसमें मैं लिखता था, उसको मैं स्टिक करता था, और मेरा एक ही सोर्स हो गया था, दैट इज बीटीआर। फिर विद ईच जी, पासिंग एंड सब्सिक्वेंट साइकिल्स, उसके बाद मैं उसको ही छोड़ और शॉर्ट करता था और शॉर्ट करता था, एंड लास्ट मतलब जो मेरी आखिरी साइकिल थी, so it was like pedia was in only 5 pages, right? Ortho is in like 6 or 7 pages, and medicine was like only like 50 pages. My pharma was in 20 pages. So वो easily revisable होता है, and you have to only write those part जो आप भूल रहे हैं. You don't have to write every section. So people tends to do this mistake कि they used to write everything in the each passing cycle notes. तो वो नहीं करना है. यस। मतलब आपने सिर्फ वही लिखा जो आप भूलते थे हम्म। हाँ, जो मतलब भूल या रहे हैं, या जो वोलेटाइल टॉपिक्स हैं हो रहे हैं, या जो क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं बार-बार, मतलब हर एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जो आप हर बार गलत करते हो, नो मैटर हाउ मच यू हैव जस्ट स्टडीड देम। तो उनको हमेशा मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू जस्ट सेपरेट देम एंड जस्ट गो थ्रू देम लाइक एवरी टाइम एंड देन। ओके बस मतलब बस आपने ऐसे ही कंसाइज किया कि जिसमें आपसे गलती होती है या जो भूल जाते हैं जो वोलेटाइल है उनको आपने बीटीआर में वही एनोटेट कर लिया उसी के साथ या आपने ऐसा भी किया कि बस पीवाईक्यू हो या पीवाईटी हो उनको भी लिख लिया साथ साथ में हाँ, हाँ, जो मतलब पीवाईटीज़, मतलब मुझे लगता है इट इज़ वेरी, मतलब इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच पर्सन, कि मतलब अगर मैं कुछ टॉपिक्स भूल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वही टॉपिक्स भूले। तो आई थिंक इट्स लाइक मतलब स्पेशल फॉर एवरीवन, राइट? तो यही है कि मुझे जो लगता था कि हाँ, कुछ पीवाईटीज़ मेरे को आते थे, पर वो मैं नहीं लिखता था कि मतलब वो मेरे को आते हैं ऑलरेडी। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते थे जो नहीं आ रहे होते हैं, या फिर गलत हो जा रहे हैं, या जिनके लिए निमोनिक बनाने पड़ रहे हैं, तो वो आई यूज्ड टू राइट देम इन अ सेपरेट थिंग, and I used to add them in my own like BTR book. बस आपने
कितनी बार सिलेबस को कंप्लीट रिवाइज किया था? और बस आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब इन माय पास्ट ईयर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम आईएनआई एंड नीट पीजी, तो उसके लिए मतलब आई हैव लाइक gone through like 6 or 7 cycles, 6 cycles I would say 6 to 7 before INI. Yeah, इट्स ह्यूज। इतना ज़्यादा सिलेबस और 6 से 7 बार आपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया। वो I think रिवीजन every स्ट्रेटेजी क्या थी person, आपकी? it's not about me because that's what I've heard from my seniors. You have to go through the multiple cycles. Either you won't able to हुँ, retain this vast amount of knowledge because you have 19 subjects, and in us 19 subject mein you have like medicine, that is a vast ocean, and like you cannot do that subject. Just you cannot be a perfectionist in that subject, so you have to just take care of the fact that you have to do all the subjects in 19 or 20 days, in last 19 or 20 days. तो उसके लिए यही था कि जो मैं सीनियर्स ने हमें बताया था, you have to go through the multiple cycles. So I've done my 6 cycles of revision before appearing for INI. और बस ये भी बात है ना कि आईएनआई सेट में ये कहा जाता है कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना? मोस्टली यही होता है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर बहुत लूज़ली पढ़ते हैं कि फर्स्ट ईयर तो कॉलेज में नए आए होते हैं और फर्स्ट ईयर में थोड़े फाउंडेशन होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? तो फर्स्ट ईयर जैसे पास आउट करते हैं, हम सेकंड ईयर में आते हैं तो फ्रीडम मिलता है। तो सेकंड ईयर उसमें चला जाता है, फर्स्ट ईयर हम पढ़ नहीं पाते हैं। और यही सुना है सबसे कि फर्स्ट और सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बस ऐसा क्या सच में है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है? और क्या है क्या मतलब एक्चुअल बात क्या है? INS, CT, and NEET PG are very different exams. They both are like ओके, on conceptually fact, they are very different exams. And in ओके, INI, they just tends to focus more on your basics. That is first and second year. They want to know how हुँ, much you have read well these subjects, how much you have studied हुँ, them, how much you have grilled in those subjects. So first year and हुँ, second year questions are usually hard, and they are more in numbers also. So first or second year is ओके, like must. You have to just have a good grip over first and second year subjects for INICT. हुँ, And in NEET, they used to just you test your knowledge, how well you have read in and how well you have prepared in the last year, in the when you have ओके, starting preparing. तो वो ये चेक करते हैं. एंड आईएनआई में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू यूज योर ब्रेन, that you have to ओके, have a sixth or seventh sense, which you call. You have to make the intelligent guesses with each passing question. You cannot just मतलब रट्टाफिकेशन ज़्यादा काम नहीं आता. You have to do every question very conceptually and mark very mark every question very 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 conceptually. कि मतलब you cannot take risk, क्योंकि जब आप रिकॉल देखते हो आपको लगता है अरे आप mark the question very very intelligently, but उसमें अलग ही हो जाता है. तो you have to just take care of that. तो इनको भी आपने डैम से किया था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। मान लीजिए पहली बार आपने नाट में बीडीसी से तो पढ़ ली थी, लेकिन आईएनआई सेट के लिए तो आपने बीडीसी से नहीं पढ़ा होगा पूरा, बिकॉज़ इट्स वेरी हम्म. ह्यूज ना। तो उसके लिए हाँ, आपने कैसे किया obviously. था? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कैसे अप्रोच किया था फर्स्ट ईयर आईएनआई में सेट के मतलब लिए? एनआर्ट, my NAT was from DAMS and BTR, and my physio was from DAMS and BTR, and my ओके, biochemistry is from Marrow. I have read Rebecca James, and I think she's the best one. She's the best one to teach biochemistry. And path and micro, I have solely and wholly dependent on Preeti ma'am. Some of my senior ओके, recommended her, so I have just like only studied from her. And along with pharma, in pharma I've like relied on my notes, that is Ankit Gupta sir's notes. I've relied on them. And forensic medicine is also from DAMS plus BTR. I've done whole of the BTR extensively. एंड थर्ड ईयर में जितना भी था डैम्स के जो मेरे नोट्स थे पहले वही पढ़े, ऑप्था के जो नोट्स थे डैम्स के वही पढ़े थे, एंड पीएसएम आल्सो अलोंग विद बीटीआर एंड माय डैम्स नोट्स. और जो मेरा फाइनल ईयर के लिए था, that is OBGY is like only and solely from Deepthi ma'am, that is DAMS. And in medicine also I have solely dependent on DAMS and BTR. BTR is very good in terms of medicine. And और फिर उसके बाद सर्जरी है, सर्जरी इज ऑल्सो फ्रॉम डैम्स प्लस बीटीआर. पीडिया के लिए डैम्स था, और ऑर्थो के लिए आई हैव रिलाइड ऑन मैरो
because I feel like Abbas Ali sir has done like a very good job with ortho. और फिर पीडिया I've also studied from Marrow only, and फिर उसके बाद derma and all our other subject, that is psyche and all, like I've done from BTR plus DAMS. बस बहुत जगह मैंने ये भी सुना है, बहुत लोग ये कहते भी हैं कि वो मेडिसिन पूरा ही स्किप कर देते, पूरी मेडिसिन ही स्किप कर देते, सिर्फ दे डू जस्ट फार्मा, पैथो, फिजियो, ये इन तीनों को अच्छे से करते हैं, मेडिसिन पढ़ते नहीं है। Like basically your medicine is only that, like amalgamation of हाँ। your pharma, path, physio, and along with a micro. So it's amalgamation, it's a constellation of all these subjects, but you cannot skip medicine, you cannot. So I haven't like few people have done that. I've also read their in like read them and like heard from them कि नहीं ऐसा नहीं, medicine you can skip medicine, but I have not skipped medicine, and I wouldn't suggest anyone to skip it because it is a very crucial subject, and around 20 to 25 sub questions comes from it, so you cannot take chance, but you can be average in medicine. That's a fact. कि you don't have to do the every question correct, but in a short subject you can do each and every question correct, but in medicine you can be like do 60 or 70% of the correct work. मतलब इतना नहीं है कि आपको मेडिसिन थरीली पढ़नी होती है. सो फिजियो, अगर आपका फिजियो पैथो फार्मा ये आपका स्ट्रांग है तो यू कैन जस्ट गो एवरेज इन मेडिसिन एंड दैट विल हेल्प यू. बस एक और बात है, बस कि ये पूछना है कि बस अप्रोच क्या होना चाहिए? जैसे 2 टाइप का अप्रोच है, एक तो हम सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच करें जैसे फिजियो, पैथो, फार्मा, एक होता है वो सिस्टम वाइज़ अप्रोच। जैसे मैंने जीआईटी किया, जीआईटी से तो जीआईटी शुरू किया, तो जीआईटी का मैंने फिजियो कर लिया, फार्मा कर लिया, पैथ कर लिया और फिर जीआईटी का ही मेडिसिन कर लिया। एक तो ये हो गया सिस्टम वाइज़ अप्रोच, तो दोनों में से बस आपको क्या लगता है कौन-सा अप्रोच ज़्यादा सही है? What worked for me is a subject wise approach, सब्जेक्ट वाइज़। इट because इट वर्क्स डिफरेंट फॉर when you are initially starting with the preparation, you don't have grip ओके। on any of the subject. Matlab fresh, हुँ, either you have like in internship also you only just tend to remember only third and fourth year subject. You obviously हाँ, forget about first and second year subjects, right? So everything is like unprepared for you. You have to just go through each subject very thoroughly in the initial cycles, but as you just go along with passing time, धीरे धीरे time के साथ, when you just go through the multiple revision or multiple cycles, so you tend to integrate that in your own mind only. कि मतलब first of all you will start with subject approach, but after a while and after a period of time you just by your own self you just tends to just integrate things, क्योंकि ultimately your preparation has to be like come on a conclusion. जब आप preparation करके when you are just appearing for exam, so before that every मतलब आप सारे के सारे सब्जेक्ट 90 सब्जेक्ट एक साथ ही याद रखते हो, तो यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स. यू कैन नॉट जस्ट गो विदाउट लाइक ई सब्जेक्ट, ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है एंड क्वेश्चन पेपर में. तो या यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट स्टफ, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द साइकिल, नॉट इन द इनिशियल फेज, आई वुड सजेस्ट. बस और ये अगला सवाल बस ये है कि बस क्लिनिकल पोस्टिंग क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जो नीट या आईएनआईएसएट की जो प्रिपरेशन है उसमें? बहुत लोग होते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग पूरा ही स्किप कर देते हैं ताकि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मतलब आपको क्या लगता है बॉस इस पे क्या मतलब कि आपको क्या लगता है क्लिनिकल पोस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी तैयारी में? आई डोंट थिंक सो कि जो भी ये लोग कह रहे हैं कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इज लाइक बेसलेस. क्लिनिकल ओके। postings indeed play a very important role in your life, but there is also other factor कि क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको पढ़ाने वाले भी लोग होने चाहिए, बताने वाले लोग भी होने चाहिए. तो या क्लिनिकल पोस्टिंग इंडीड प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल, क्योंकि आप जो चीज देखते हो, आपने कोई केस देखा है क्लिनिकल पोस्टिंग में, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट. यू कैन नेवर गो रॉन्ग कि आपने बस एक बार देख लिया है and you will just memorize it like for your whole lifetime. You won't even forget about it. And there are instruments, there are like मतलब लोग अपने जब प्रिपेयर करते हैं तो used to just mug up those things from the books only, from the pictures only. But during a clinical posting time, if you just
learn about these instrument, if you have seen them, so you will not have to do that extra efforts, right? तो मतलब ये हम्म, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में I will suggest like you have to like for the third year subject and the fourth year subject you have to attend all of the postings. क्लिनिकल पोस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी Is इम्पोर्टेंट। very important, very important. बस, और अगला सवाल बस कि आपने बस पढ़ाई और मजे, कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट वगैरह, है ना, इतने सारे इवेंट तो हर महीने होते ही रहते हैं कॉलेज में, तो आपने इन सब चीज को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपको बस हमने देखा है हर जगह आप पार्टिसिपेट भी करते थे, पेंटिंग तो आपकी बस टॉप नॉच थी, आप हर जगह पार्टिसिपेट भी करते थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट थे। ऐसा नहीं कि हमेशा जो लोग होते हैं कि मतलब बिल्कुल स्टडी नट, बिल्कुल किताब में घुसे पड़े हैं, दिखते ही नहीं लाइब्रेरी, वैसा तो था नहीं आपका। आप हर जगह पार्ट भी लेते थे, को करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत आगे थे, डांस भी, सब था। उसके बाद से आपने ये मतलब पढ़ाई भी किया, तो इसको कैसे आपने मैनेज किया था? I think you have to set your priorities right in each segment of time. I think it's very important कि मतलब ऐसा ना हो कि लाइफ बहुत monotonous हो जाए, and it develops you as a person when you are also like doing the co-curricular activities and along with your studies. तो जब पढ़ने का टाइम है आप जब पढ़ने का टाइम था तो जब मैं पढ़ा, और जब enjoy करने का टाइम था so I did that. And वही था कि जब आपके मतलब जब फेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो सब लोग ही एंजॉय कर रहे थे, so you don't want to be a person who just stands in or sits in the corner and reading books. So yeah, जब भी enjoyment का time होता था I took time for myself to enjoy that. And when profs used to approach, so yeah, मतलब ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ prof के टाइम आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही थे हमेशा, and when हम्म, prof used to come you have to just go like very hard on them. So that's the fact. तो उस कॉलेज टाइम की कोई एक फन स्टोरी जो मतलब आपको अभी भी याद है, सबसे ज्यादा मजेदार, जो आप हमें बता सके? I think like there are too कोई many कोई ऐसा stories, and I मोमेंट think या it's कुछ not भी? they are not only my story. It's like belongs to whole of the 17 batch, and there's like there was one of the story जब हम लोगों ने टंकी काट दी थी, तो I Viva used to only base on that subject कि टंकी किसने काटी. And we have also like forged balloons, we have bunked our internals, and there are too many stories along with 17 batch because our batch used to be like the most notorious kind of batch. So yeah. फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डरमा? Yeah, yeah. It has already व्हाई been a डरमा? too long. I think. बस पहले से मतलब आपने सोच रखा था कि डरमा ही चाहिए? बस मतलब क्यों, मतलब नहीं नहीं डरमा में ऐसा आपको इंटरेस्ट? नो आई लाइक ओनली मतलब जितना मैंने सीनियर से सुना था तो एक पहले स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन देयर वाज ओनली वन थिंग इन माय माइंड टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक सो दैट आई कैन हैव ऑल द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी. एंड मतलब जितना ये था मेरे को एक मतलब एक थोड़ा लाइफस्टाइल वाइज और थोड़ा वैसी ब्रांच चाहिए थी. सो माय ऑप्शंस वर रेडियो एंड डर्मा. Along with that, I have a very keen interest in OBGY, but I have put like radio and derma over the OBGY and then pedia. So these were my choices when I was like going through the counseling. So when I got the derma, so I got I was very happy about it. But yeah, I skipped radio. But it's fine. You lose some and you win some, so it's okay. सही बात। बस मेडिसिन कहीं दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं था, Nah, मेडिसिन it was सर्जरी। never in my option because I don't enjoy medicine as a subject. I have read thoroughly and I like medicine as a subject, but I don't see myself to be a physician or to just pursue परसुइंग my करियर। career in a medicine. Yeah. बस हो गए सारे क्वेश्चन बॉस, इतने क्वेश्चन हमें मिले थे, है ना, सबसे जो हमने Yeah. पोल कराया था बस। बस बहुत 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 थैंक यू बॉस, आपने इतने बिजी शेड्यूल से जो हमारे लिए टाइम निकाला मॉर्निंग मेडिकोस के इतना लिए। कोई बस। नहीं नहीं इतना कोई बिजी नहीं था, बट थैंक्स टू यू टू रीचिंग आउट टू मी. एंड thanks to you like morning medicos what you are doing with like हमारे ओके, कॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ. मतलब टू बी लाइक बी अ वेरी academically good thing. मतलब इतना academically good जो कर रहे हो तुम लोग, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग. एंड मतलब रीच आउट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू बॉस।
बस हमने शुरू किया है बॉस, अभी तो हम चाहते हैं सारे सीनियर से हाँ, it's सपोर्ट, still in बॉस the आपने initial बहुत stage, सपोर्ट but it will certainly reap good results for you. थैंक यू बॉस, थैंक यू।